Shall we start, ma'am? Now, to whom you're asking? Meenakshi ma'am or me? Meenakshi, ma'am, I'm asking. Okay. Okay. Technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. With this quote, I would like to welcome Ayesha Tazeen, ma'am, for today's session, Technology in Education. I welcome each one of you who has joined in today's webinar. Our keynote speaker, as I said, Ayesha Tazeen, ma'am, she'll be taking us through this session. But before that, I would like to introduce our founder and chairperson, Dr. Harshwat Singh. Dr. Harshwat Singh, sir, is the founder of chairperson of Prithviabuddha Association India, Paai. This association is currently working in more than 10 countries. More than 10,000 academicians are benefiting under the banner of this association. Prithviabuddha Association India is a non-profit organization for education leaders and other stakeholders with a purpose to facilitate knowledge sharing, empower education leaders, to provide financial aid to those educators who are jobless, and instilling leadership in the education sector. Dr. Harshwardhan Singh has more than 10 years of experience in the field of education. He is a multi-talented personality, an experienced consultant, an instructor, educator, facilitator, motivator, and inspiring public speaker with a vast understanding and knowledge. Honored with more than 50 plus national and international awards as Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Rashtriya Shiksha Ratan Samman, Educator of the Year 2021, World Best Mentor Award, Dedicated Educationist, All India Education Award 2021, Dr. APJ Abdul Kalam International Award of Excellence 2021, Siksha Padam Samman, Impeccable Creative Thinker Award, Guru Parva Samman National Earth Care Award. I welcome you, sir, for today's session. Now it's time to introduce our keynote speaker, Ayesha Tazeen, ma'am. Ayesha Tazeen, ma'am, is PGT Chemistry International Indians from International Indian School AL Jubail KSA, by President Telangana State, AIEF Global Ambassador, Brand Ambassador of Azadi Ka Amrit Mahotsav, NUS FLP Certified Mentor, RDX Certified Speaker. I welcome you, ma'am. Over to you. Ayesha Tazeen, ma'am, I hope you are there. Acha. Yes, I am there. Shall I start, Preeti ma'am? Yes, I welcome you. Yeah. Okay, fine. Just, dear educators, let me share the screen. Yes, ma'am, sure. Yeah. Take him out. Yeah. Is the screen visible to all of you? It's visible, ma'am. Yes, visible, ma'am. Yeah. Am I audible? Yes, perfect. ma'am. Yeah. So, Preeti ma'am, as always, I may be needing your, help a little, that I'll be asking in the middle, am I audible or is it visible? So please respond to me, because when I am on the screen of my PPT, I am completely not seeing anything on my page, any one of you. So I'm a kind of asynchronous we have become now. Right. Please tell me whenever it is not audible and whenever it is not visible. Sure, Yes, ma'am? Sure. Yeah, thank you so much.
Dear all esteemed educators, I welcome you all to this very august gathering of learning and understanding, exploring and brainstorming. We all are very lucky that we are associated with a galaxy that is full of intellectuals, educators across the country for the development of our country, our nation, and preparing the future generation. So we all are playing a pivotal role and definitely contributing to the development of our nation. Each and every one of us is a symbol of development in the form of a unit to our country. So actually, we all need to pat our back. So I all exhort you, request you humbly to pat your back, saying, great, great, great. Can you please do that? Can you please pat your back? Yes, yes, we are doing. Yes, yes. So the reason I told you, because very successfully, very satisfactorily, we have crossed the pandemic. You and me are alive by the grace of Almighty. Reason, as educators, a point came, when we all were about to wander and break. But thanks to the technology at that time that held all of us together at one platform, that is virtual platform. During pandemic, though we were all not connected physically, but we were more connected virtually across the globe. Imagine, it was pandemic. Due to this technology, I have finished my 100 certification courses and I bagged more than 200 certificates. Such is the power, such is the impact of technology on the lives of educators and in the field of education. Dear all, let us try to understand the technology in education. Please mute, any one of you, please. Just a minute. Just a minute. Please mute The people yourself. have not muted. There is a kind of disturbance. Can you please? Yes, thank you. So, technology in education is the basic need of the hour. Remember, if we are not aware of technology, we become technophobic. We fear with technology. Instead, we adopt, embrace, and have a command on technology, then we will become technophilic. Now, please, educators, tell me, are we technophobic at the moment or technophilic? Technophobic means fearing with the technology. Technophilic means moving towards technology. Now tell me, are we technophobic or technophilic? Please mute Yes, yourself. we all are definitely technophilic. I want to trace out from Sorry, where I'm ma'am. getting the disturbance. Yeah, Ah. Gauri ma'am, will you please mute yourself, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please mute yourself, ma'am. Mute yourself. Karan Sufi, Okay, ma'am. please mute yourself. I hope Meenakshi, you have the right to mute everyone. Karan Sufi, there are people, I request you very humbly to mute yourself. Let us understand it. The topic is really very interesting. Let us explore it. Kindly mute yourself, because I'm getting the disturbances. Gauri ma'am, will you please mute yourself, ma'am? Still, Gauri ma'am and Karan sir is not muted. Can you please mute yourself? I request you to mute yourself. Good evening, ma'am. Can Good you please evening, mute ma'am. yourself? Good evening, sir. Can you please mute yourself so that we can continue with the session? I'm not speaking English. प्लीज थोड़ा टॉपिक को आप हिंदी में थोड़ा मुझे ट्रांसलेट कर सकते हैं?
I think Aisha ma'am, he is trying to say, can you bit explain in Hindi too, because he is not familiar with हाँ, English. अच्छा अच्छा, म्यूट मैंने कहा सर म्यूट कर लीजिए. अच्छा, दोनों ने भी म्यूट कर लिया है. थैंक यू. विल गो बैक टू द सेशन. या, so we all are technophilic because we move towards technology, and our presence today in this webinar itself indicates that we are very much technophilic. We are the people who always move towards technology. Now, remember, always we have a fear. Oh, technology is emerging, artificial intelligence, machine learning, augmented reality, virtual reality, blockchain technology. So are the robotics. So all these technologies are going to replace the teachers? We have a question. We have a phobia in our mind. Believe me, no technology has the power to replace the teachers. No technology will replace teachers. But at the same time, let me tell you, technologically equipped teachers will definitely replace technology ill-equipped educators. So if we are aware of technology, then well-equipped, technologically well-equipped teachers will definitely replace technologically ill-equipped teachers. So this is all about technology and understanding it. Now, we'll go back with a minute. So, this one. What is education technology? Education technology is also called edutech or edtech. Short form is that it is edtech or edutech, and it is the combined use of computer hardware. That I am sitting in front of my laptop. You all are sitting by taking your own devices. That is what we have, a kind of device with us to which we can feel, touch. So that is a hardware, and the software, that is the inbuilt system inside. So it is a combination of hardware and software and educational theory and practice to facilitate learning, to make the learning easy. When referred to it, its abbreviation edtech, it is often referring to the industry of companies that create educational technology. So what is that edutech? It is nothing but edu for education, technology. The abbreviation of technology we have taken as tech, and abbreviation of education we have taken as edu. So it is edutech. So when we use the hardware and software and we combine along with education theories, that's how education technology develops. That is the definition of education technology. Now, why education technology? What's the reason that we should have education technology? See, before pandemic, we all were taking the classes physically, face to face, in a classroom setup. At the time, I'll tell you my own story. I could not understand and believe that the virtual world is more expanded, even deepest than the Pacific Ocean. This I never knew before pandemic. I was fully equipped, thinking myself a very great teacher, teaching excellently in the class using the board. Of course, now and then we used to have a smart class. Maybe once in a week, regularly, we used to have a smart class. In that, we have in our classroom overhead projector. So I used to take my laptop and I used to explain the complex structures with the help of the laptop. And that used to happen once in a week before pandemic. And we were all happy, satisfied. Children were happy, parents were happy. Me as education, we were happy. We were producing 100% results and all are happy. Suddenly, with the outburst of the pandemic, there was a very big question, stigma, and I was completely devastated by seeing the scenario and situation when all teachers have to wait what to do next.
the 1 week before starting the new session, we planned, we conducted so many meetings. As an officiating vice principal, I was the key element to trigger the process. Then we had to try different apps like Zoom, Google Meet, Teams app, WebEx Meet, and then various kinds of LMS we were exposed to, like Moodle, Edmatics, and we have so many other like NLP, many learning management systems we have learned during the pandemic, and we were switching over from one LMS to other by seeing its benefits. Google Classroom itself was a very big platform in the form of LMS, learning management system. So why edutech? When we are aware of education technology, we can confidently be well versed, become expert in Sorry blended to learning, interrupt. offline and online learning. Sorry to interrupt, Ayesha ma'am. Yeah. Karan sir, may I know why you are presenting, sir? So can you please stop presenting? Yes, ma'am. And can you please mute yourself? Karan sir started presenting. So can you please stop presenting? Karan sir, may I request you to please stop presenting? Just unshare. Stop sharing. Yes, ma'am. Please stop sharing. Your Okay, screen ma'am. is on. Yeah, please. है ना? Please do take care of Okay. all this. It's a lot. It Okay, created ma'am. a lot of disturbance, and it also the continuation is also interrupted. Okay, ma'am. Now is it visible, ma'am? नहीं, करण सर आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है. आप अपनी स्क्रीन को अनशेयर करिए. आप अनशेयर करिए, अनशेयर करिए. आप ये जी जी जी. Stop आपके वहाँ sharing. पे- If he joined Google Meet, आपके now वहाँ तो ask पे him to stop sharing. शेयरिंग का आ रहा होगा, लिखकर आ रहा होगा ऊपर कहीं, वहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करिए आप. ब्लू बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए सर. जी जी. Ayesha ma'am, can you please present so that may be possible that you start presenting and he's automatically stopped. Can अच्छा, you I will again- restart. हाँ, again just restart maybe because how he started I don't know. Okay, okay, प्रीति okay. एक बार करण सर को वापस से ज्वाइन करने के लिए बोलिए, मेरे ख्याल से फिर ठीक हो जाएगा. करण सर देखिए मुझे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है स्टॉप शेयरिंग, आप उस पे जाइए, स्टॉप शेयर करिए, स्टॉप Okay, शेयरिंग ma'am. करिए. Okay, ma'am. थैंक यू. नाउ आयशा मैम आप शेयर कर लीजिए स्क्रीन. Okay, okay. I'll share again. Yeah. Is it visible now, Prithvi ma'am? Yes, yes. Yeah. Okay, okay, okay. No problem. मैं बोलूंगी हिंदी में. मैं बोलूंगी इंशाल्लाह. Sure. Thank you, ma'am, for telling me and guiding me to that part. Otherwise, I was really not knowing it. Okay. ये कुत्ते का पिल्ला थोड़ा. Thank you. So the importance of edutech does not just lie with the power it has to bring down costs and engage learners in new and innovative ways. It is also about the way in which it can equalize standards and enable access for all, resulting in the democratization of education. And edtech is going mainstream, national and big budget. Tech innovation and learning innovation are finding symbiosis. Educators are on board. We are all on board. अभी क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि वाई एड्यूटेक, हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी को क्यों हासिल करें, वाई वी शुड लर्न इट, हम क्यों पढ़ें, क्यों समझें, क्यों इस्तेमाल करें, इसका क्यों प्रयोग करें. रीजन सिंपल सा है कि अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है और ये मेन स्ट्रीम नेशनल और इंटरनेशनली ये मेन स्ट्रीम में आ गई है. नाउ इट इज बूमिंग एंड एमर्जिंग. And all the countries are putting a big budget
in their financial budget. A very big part of the budget has been given for education technology to improve it and to facilitate learning. बच्चों को पढ़ाने में टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी आसानी हो, इस वजह से ज्यादा बजट हर कंट्री इस पर डाल रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर. सो इससे ये बात वेरी क्लियर हमको हो गई कि सारे एजुकेटर्स अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, सारे एजुकेटर्स अब ऑन बोर्ड हैं. ऑन बोर्ड है मीन्स दे हैव एम्ब्रेस्ड द टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं एंड दे आर लर्निंग. एंड बहुत हैरानी है, वी विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ड्यूरिंग पैंडेमिक we did not learn anything each day, each moment. हमने हर लम्हा कुछ सीखा. Do you all agree with me? Not only in a day, एक दिन में नहीं बल्कि एक एक लम्हे में हम कुछ नया 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 सीखते गए. Yes or no? Please tell me. Yeah. That was my personal experience and the experience of my colleagues. कि हम लोगों ने एक दिन में कुछ नहीं सीखा, एक दिन में एक चीज नहीं सीखी, बल्कि एक एक लम्हे में, एक एक सेकंड में हमने एक चीज सीखी. That's why that was the reason we could get good result. वो रीजन था जिसकी वजह से, वो वजह थी जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. हमारी बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट नहीं हुई और कोई बच्चे का कोई साल नहीं रुका. तो ये रीजन है कि जब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको आ जाते हैं तो वी हैव टू स्टैंड विद द टेक्नोलॉजी. अभी तेलंगाना में पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा बारिश है. सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करवा दिया गया, बट सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे रन वेरी स्मूथली बाय सिटिंग एट होम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. तो उनका करिकुलम भी इफेक्ट नहीं हुआ, टीचर्स का सिलेबस भी पीछे नहीं हुआ. सेम बैक इन केस है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर आई टीच, जहां मैं पढ़ाती हूँ, वहां पे सिवियर कंडीशंस ऑफ हीट 45 हो गया टेम्परेचर. तो वी इमीडिएटली स्टॉप्ड कमिंग टू स्कूल एंड वी स्टार्टेड ऑनलाइन. So blended learning, kabhi online, kabhi offline. So we became very perfect, confident rather in blended learning. तो यहाँ पे जाके टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त रोल आता है. तो क्या टेक्नोलॉजी हमको रिप्लेस कर देगी? हरगिज नहीं रिप्लेस कर सकती. फिर कौन हमें रिप्लेस कर सकता है? वो जो टेक्नोलॉजिकली वेल साउंड है, वेल इक्विप्ड है, वो लोग बेशक उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जिनको टेक्नोलॉजी की कुछ समझ नहीं. तो इससे ये पता चला कि वी हैव टू बी वेरी वेल अवेयर. जो न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो एप्स हैं, जो एडटेक टूल्स हैं, हमको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है. अगर हम रहना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड में, अपने अपने प्लेसेस पे, वेर एवर वी आर, हम जहां जहां हैं, हम वहां रहना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी को समझें, उसको प्रैक्टिस करें और उसको इम्प्लीमेंट करें. तो हम टेक्नोफिलिक बनते रहेंगे, अदरवाइज हम टेक्नोफोबिक बन जाएंगे. तो अब ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी इतना जरूरी इसलिए हो गई है कि हर तरफ अक्रॉस द ग्लोब इसका जो है इमर्जिंग ट्रेंड है. इट इज ऑन बूम. इसके बगैर अब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीचिंग. अब यहाँ पे we have 3 types of education technology. What are those? Synchronous and asynchronous. एक टाइप हो गया. Type number 1, synchronous and asynchronous. Number 2, linear learning. Number 3, collaborative learning. What is synchronous learning? मैंने बताया है कि education technology के 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप तो आता है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, दूसरा है लीनियर और तीसरा है कोलैबोरेटिव लर्निंग. तो हम देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस. ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है? सिंक्रोनस वो है like now we are connected, we are face to face, though virtually no doubt, but we are face to face. I can understand you, you can understand me, you are questioning, I am answering, I am questioning, you are answering. So we all are at one platform and we have face to face interaction. So that is synchronous. We are synchronized, we are combined, we are together on one platform, that is Google Meet. One. What is asynchronous? Asynchronous is that type, like any learning portal like Diksha, Nishtha, Swayam, NPTEL. These are the portals where you have some programs. Go to the portal, log in,
enroll, do the program, you will see various modules वहां पे आएंगे. दीक्षा का एक पोर्टल हो गया जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू. निष्ठा का एक पोर्टल है, स्वयं का गवर्नमेंट ऑफ एचआरडी ने लॉन्च किया है, और एनपीटेल नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्नोलॉजिकली एनहांस्ड लर्निंग. सो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पोर्टल्स हैं. वी हैव टू गो देयर थ्रू ए ब्राउजर. एक ब्राउजर के थ्रू वहां जाएं, क्लिक करें, लॉग इन करें, एनरोल करें एंड स्टार्ट लर्निंग. वो एसिंक्रोनस है क्योंकि वहां पे कोई आपको इस तरह से सवाल जवाब करने के लिए नहीं होता. मॉड्यूल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, आप उसको पढ़ें, समझें, देन वहां पे टेस्ट होता है, टेस्ट करें, 80% आ गया, यू विल गेट सर्टिफिकेट. तो वो हो गया आपका एसिंक्रोनस, जहां पे इंस्ट्रक्टर इज नॉट face to face interacting with the students. That is asynchronous. Am I clear, madam? Yeah, very much. Okay, thank you, ma'am. अब है next linear learning. Linear learning को computer based learning भी कहते हैं. उसमें आपको वीडियोस आ जाते हैं. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल किसी को ट्रेनिंग देनी है, कुछ टीचर्स ट्रेनिंग मान लीजिए, तो वो टीचर्स ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स अगर आपको आपके मोबाइल पे आ गए, आपके कंप्यूटर पे आ गए, आपके मेल के थ्रू आ गए, और उससे आप बस सीख रहे हैं. कोई आपको जो है टेक्स्ट बुक नहीं है, कुछ नहीं, बस मॉड्यूल आ गया आपको, और वो मॉड्यूल एक वीडियो की शक्ल में आया है और एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आया है, और वो आप देख रहे हैं. सो दैट इज योर लीनियर लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग. ओके, सेकेंड फॉर्म. थर्ड इज ए कोलैबोरेटिव लर्निंग. कोलैबोरेटिव लर्निंग में ऑल एजुकेटर्स विल कम टुगेदर, दे हैव वन प्रॉब्लम, दे brainstorm on that problem. Each educator will tell one solution, all of them brainstorm, finally one solution is found. With the collaboration, with the help of the team, this learning takes place. So it is called collaborative learning. So education technology is based on these three types: synchronous, face to face; asynchronous, where teacher is not there, only the modules are there; and linear learning, the material will come at your mail, in your laptop, in your computer, in your tab, in your mobile, and just you will see it and learn and get trained. And collaborative learning, all of you sit together in a team and learn. So that is also the third type of education technology. Now advantages क्या हैं education technology के? advantages, फायदे क्या हैं? It is fully automated, हर चीज fully automatic है. And edtech applications are automated to prevent human errors in accounting. Accounts में कुछ human errors नहीं होते. For example, आप ले लीजिए Microsoft का जो system है, software है, उसमें you have so many things. MS Office है, MS Word है, where you type something. If you go wrong, red line comes, so immediately you rectify it. तो ये fully आपको correct करता जाता है. So it is fully automated and error free है ये. इसी तरह से you have MS Excel. आप कुछ भी आप wrong करोगे तो डेटा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा and you will not get the Excel sheet. Rather you will get some dots and error it shows. So that is error-free work with the technology. Then registration process becomes easy, employment becomes easy, and other divisions in education foundations will facilitate the work. आपका काम education technology आसान कर देती है in various areas. चाहे वो registration हो, चाहे वो accounts हो, employment हो, या education के other departments के काम हो, it makes your work easy. For example, छोटी सी बात, we are using mobile. I am texting something in the group of Paai, immediately you will read and you will respond. ये कैसे हो रहा है? This is technology. Which kind of technology is working in the mobile? This is nothing but artificial intelligence. मैंने ये PPT बनाया, मैंने रिसर्च की, बहुत सारे वेबसाइट्स पे गई, वहां से मटेरियल निकाला, तो all this I was able to get because of artificial intelligence. Digitalization of the world. Digital technology is a part of education technology. अभी हम फोटोज लेते हैं, अब उस पे हमारे बच्चे डिफरेंट उस फोटो को क्रिएट करते हैं. कभी उसको ताज पहना दिया, क्राउन पहना दिया, इधर से फ्लावर लगा दिया. दैट इज अगेन ए फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, उसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. बच्चे हमारे वीडियो गेम्स खेलते हैं एंड ड्यूरिंग दैट दे वेयर ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्लासेस, दैट इज वर्चुअल रियलिटी. So these are the emerging. अभी हमारा CBSE का रिजल्ट हो रहा है. CBSE has
lakhs of schools across the globe. So how CBSE is able to compile all the result at one site of CBSE? Blockchain technology. That's how the blockchain works in creating the result. So all these are very, very important emerging education technologies. So we have to be very well aware of it. Then it enhances creativity and visualization, and the work is completely paperless. अभी हमने देखा पैंडेमिक में हमारे इतने एग्जाम्स हुए, इतने टेस्ट हुए, बट वी डिड नॉट यूज अ सिंगल पेपर. हमारा वहां पे जितना भी उसका अमाउंट था पेपर का, दैट इज ऑल सेफ बिकॉज वी डिड नॉट यूज अ सिंगल शीट. एवरीथिंग वी डिड. पूरे पीडीएफ हमने बनाए, करेक्शन भी पीडीएफ के ही हुए, ऑनलाइन करेक्शन हुआ, हमने गूगल फॉर्म्स बनाए, तो वो सेल्फ स्कोरिंग था. So everything was completely paperless. So we did the paperless work for 2 years or more than 2 years. And incessant learning, it promotes incessant learning, auto grading, as I said, Google form, and improves students teachers collaboration. And EdTech advantages we have seen, and now we'll see the disadvantages. What are that disadvantages that we are very much worried about? It is first a distraction. No doubt, education technology is helping us to grow and to get familiar with many things across the world, to get connected with the world. It is helping in globalization. It is helping in liberalization. It is giving us the kind of freedom to learn in our own pace. No doubt, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्प कर रही है, हम बहुत लर्न कर रहे हैं, each day, each minute, each second हम लर्न कर रहे हैं. But still, उसके साथ, like any other thing, हर किसी के साथ we have advantages, फायदे भी हैं, हर किसी के नुकसानात भी हैं, right? अब देखिए disadvantages. Use of technology can distract student, of course. अभी हम उनको पढ़ने के लिए देंगे तो वो WhatsApp पे वहां से वो अपने फ्रेंड के ग्रुप में जाके वहां पे चैटिंग होती रहती है. That we have seen during pandemic, what our kids were doing. So we had to monitor them. Then remove students from. Why my sound is equal? Somebody opened it or what? Yeah. So technology can discourage creativity. अब हम इतना ज़्यादा technological prone हो जाएंगे, too much we get involved in ourselves from morning dawn to dusk. It is a possibility. There is a possibility that we may hamper our creativity because screen time is increasing. That may, make us feel dull, and because of that, we may lose the creativity in other activities. So no immediate feedback from instructors. And when we are doing, if it is asynchronous type of technology, then immediate feedback students का हमको नहीं आता है. अभी हमारा synchronous है अभी, लेकिन अगर ये asynchronous होता, अब मैंने सिर्फ आपको पीपीटी देके छोड़ दिया होता कि भाई आप लोग पढ़ लीजिए पीपीटी, तो मैं वहां पे नहीं हूं और मैंने पीपीटी बनाई है, आपको कुछ डाउट आ रहा है, आप मुझसे नहीं पूछ सकते, तो नो फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर. दैट इज एसिंक्रोनस टाइप. उसका एक डिसएडवांटेज है. लैक फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कनेक्शन विद इंस्ट्रक्टर. हमने देखा जब हम जूम की क्लासेस लेते थे तो बच्चे सारे आ जाते थे क्लास में. दे ऑल यूज्ड टू कम इन द क्लास, बट वी डोंट नो हु इज वेयर. क्या वो वॉशरूम में है, बेड में सो रहा है, उठ के बैठा है, डाइनिंग टेबल पे है, खा रहा है, बिकॉज कैमराज आर ऑफ. हम बोलेंगे कैमरा ऑन करो, he will say no, my net is very slow, if I on camera you cannot listen to me or I cannot listen to you. Yes, Sara, we have seen it. So that is, we lack face to face interaction and true connection. And then it will require more time. It requires technological awareness. कोई आप tool use करें तो you must first of all know how to use it, then only you can use it. So you should be technologically aware. Then it requires students to have access to technology, which is not always possible for low income students. हमने ये भी देखा, जो remote areas में बच्चे थे, जो farmers के बच्चे थे, जो low income group के बच्चे थे, तो उनको कितनी problem हुई net के लिए, device के लिए. I have seen one girl from Kashmir. She used to go nearly 4 kilometers away from home, and she used to sit on the tree to get the Wi-Fi network. And I mean, by struggling that much, she cleared 10th class. So they had to struggle. Low income group people have to struggle to get the connection, to get the device, and they should have the knowledge to operate the system, operate the apps, operate the technology. That is a disadvantage. Success story. I'd like to share a success story of my school. Very happily, I would like to inform you all that in 2015, when the management committee came in,
They said that now education technology is really emerging across the world. So we should have smart classrooms, at least for each section. For KG section, at least one. On complete KG section, at least one. Complete JPS junior primary section, at least one. Complete SPG senior primary section one. And complete secondary section one. And complete senior secondary section where I was working, one. Senior secondary section, we all know it is from 9 to 12. तो ऐसे करके स्मार्ट क्लासेस बनाए मैनेजमेंट कमिटी ने along with the help of the principal by mutual collaboration. That really helped us during pandemic. Pandemic में जब हम लोग pandemic के बाद जब हम classes आए तो the overhead projectors were there in each class from 9 to 12. We could easily teach all the students very nicely, very happily by explaining them many concepts in short time. तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से हम ये अपना लैपटॉप लगाते थे एंड वो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट होके बोर्ड पे आ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे, एंड वी आर एक्सप्लेनिंग. सो सिंपल. सिर्फ आपको करना ये है, जो आप लैपटॉप घर से पढ़ाते थे वो स्कूल ले जाइए. दैट वाज वेरी सिंपल. सो दैट इज रियली सक्सेसफुल. उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स इतने वेल इक्विप्ड थे कि ड्यूरिंग पैंडेमिक मेरे सेक्शन में 9 to 12 में 20 sections were there. Each class made one e-magazine during pandemic. And we have done all the celebrations, like one I have written here, Science Day celebration. We did it completely virtually online for the first time in the history of school during pandemic. A big event took place virtually by the students themselves. Class 10th students ने Science Day, National Science Day इतना बेहतरीन मनाया, इतना बेहतरीन celebrate किया. They only started up. We have no doubt guided them by taking again Zoom meetings. And then on that day, they showcased it for the very first time in such a grand way that my management committee member said that we should have invited some other schools to see this great program. So that's how it works. When we are very well aware of the situation, of the need, जब हमें पता चल जाता है कि अब इसकी जरूरत है और हम वो सीख जाते हैं as an educator, then we are teaching back to the students. And then with a mutual collaboration of teachers and students, जब हम ये सिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो they really enjoy. और जब ड्यूरिंग पैंडेमिक ओनली मैंने सर्टिफाई एम बनाना सीखा, जो जनरेट करते हैं हम लोग सर्टिफिकेट्स यूजिंग द सर्टिफाई एम एड ऑन इन गूगल फॉर्म. दैट वाज द फर्स्ट टाइम in 2020 I started preparing Certify EM, and on National Science Day I have conducted a quiz program and I have given them the certificates online. First time in my life, first time in the history of school, we have given online certificates to the students using Certify M during pandemic by celebrating Science Day. And after complete celebrating it, I have sent to the Google form all questions I have framed, which were based on the program we have conducted during the virtual. When we have seen at the virtual platform, all the events based upon that only I have framed the questions. So a child who sees completely the program, understands the various concepts, the same questions were asked. So if he scores more than 80, then he or she will get the certificate, and all got the certificate in at their email. So they enjoyed a lot. So that's how we could make any moment, any situation possible, happy, successful, when we are aware of using technology. That's how it works. Now, what are the principles? There are 4 principles of technology. It is not the solution to the learning crisis, but technology can be solution to specific micro problems within the education system. हमारा micro problem क्या था? कि we were unable to contact face to face. हम face to face नहीं पढ़ा सकते थे. So we used technology. That was our. It managed, the technology managed the problem of the education system. And if you're going to invest in technology, invest in the training, support, monitoring, and maintenance to make it work. Principle 2. Principle 3, test the technology. हमने test किया, हमने Zoom test किया, फिर हमने Google Meet test किया, फिर हमने Teams app, Microsoft MS Teams app हमने use किया, फिर हम WebEx पे गए. Many we have used, one by one. And so we tested the technology. We have to test the technology. Make sure it works. Make sure it is used. Make sure it increases learning. Definitely it will increase learning. But the learner should not be, digress. He should not be distracted. If he is not distracted, if he is focused, then definitely he will learn. Principle 4,
technology to monitor and manage teachers will only work with political built-in. Political built-in means your MCs, your main, main management people, those who are there at a higher level, they should understand first your need. Then only it will come to you and you can enjoy. For example, when we were using, and if they would have said don't use it right in 2015, so we would not have become aware in 2020. So the setup that we have done in 2015, believe me, helped us like a backbone. After pandemic, when we immediately resumed to our classes, we started in each class overhead projectors. We took our laptops and we started teaching. मैम मैं कुछ कह सकता हूँ? सर मैं आप बस मुझे एक और ये कहने दीजिए, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगी सर. हाँ जी जरूर जरूर. एक ये रह जाती है, एक स्लाइड रह जाती है सर. हाँ जी जरूर जरूर. ओके, थैंक यू सर. तो ये these are the things that we need to know. ये सारे apps हैं, edtech tools हैं. इसमें we all know about Zoom, we know Flipgrid, we know PeerDeck, Minecraft हमें पता है, Nearpod, Adobe, Canva we are using, okay, Edpuzzle we are using, Skype we are using. So all these are the education tools we have to be very well aware of, and Kahoot is one another. So there are many other tools that we use to equip ourselves and use that to help the students. Let me tell you, Google for Education, Google Workplace or Workspace, so many apps are there, like Google Classroom, Google Meet that we are using now, Google Forms, Google Maps. Many other apps are together, Google Docs, Documents, Drive. So all those are very, very helpful, helping educational tool in teaching students. So virtual world is more deeper than a Pacific Ocean in my view. So thank you for your attention. Yes, sir. I have finished and I will stop sharing. Now you can. Thank you, Ayesha ma'am, for giving such a wonderful explanation about that, how teacher with the technology can groom themselves and be the right fit in this after this pandemic, otherwise in the dynamic change or in the dynamic change in the education. So this was very wonderful, and it's rightly said that like if the teachers are fearing that they are going to be kicked off because of the technology, that their thinking is wrong. If you update yourself with the technology, you are definitely going to replace the people, those who are adamant not to change. Thanks for inciting session. Yes, Karan sir, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ जी मैम, जैसे आपने कहा कि सॉफ्टवेयर के बारे में जिक्र किया आपने. आप सभी जानते हैं कि भी मैं म्यूजिक से रिलेटेड हूँ. आज तक मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है. तो कभी भी हम कोई भी जैसे सवालात हम पूछते हैं, अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से मैं ये पूछूं कि मुझे नई कॉम्पोजिशन चाहिए जो कि आज तक नहीं बनी, या मुझे नई वर्डिंग्स चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं लिखी, तो वो चीज वो नहीं दे सकता मुझे बना के. सेकेंडली, अब मैं किसी से पूछता हूँ संसार में जो फैशन है. सर आपको हम लोग जो सुन नहीं डॉक्टर पा रहे हैं, आपका थोड़ा नेटवर्क का बीच में वो हो गया है. कैन यू कम बैक? आप फिर से वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी. अब जैसे मैं सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट से या जिन्होंने पीएचडी की है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इस संसार में सबसे पहले किसने गाया. आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? हाँ, सुनाई दे रहा है. कहिए. हाँ जी. तो उन्हें पता नहीं, उनको ये पता नहीं, वो तुरंत फोन की तरफ भागते हैं और उसमें से देखते हैं, देखने के बाद मुझे बताते हैं. मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी हार्ट की कितनी नाड़ियां हैं. आप जितने मेंबर बैठे हैं शायद आपको पता हो, आप बता सकते हैं हमारी हार्ट की कितनी नाड़ियां हैं? 22.
आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ. इज इट रेलेवेंट टू द सेशन? मींस लाइक कैन यू हाँ कम जी बैक टू द क्वेश्चन? जी जी जी, मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे अपने एक तौर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा कहने का मतलब है कि हम सारे ही टेक्नोलॉजिकल के ऊपर उसके अधीन हो चुके हैं. प्रैक्टिकली कुछ रहा ही नहीं. यस कोई भी यस, सवाल. ये मैं समझ गई. आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज ये है कि आप जी इतने टेक्नोलॉजिकल प्रोन हो गए हैं कि आपकी खुद की एक्टिविटी जीरो हो खत्म गई. हो गई है. मैं मानती हूँ. यस, यू आर हाँ ट्रू, जी हाँ यू आर जी राइट. जी जी, खुद खत्म हो गई है. इट हैम्पर्स हम क्रिएटिविटी, करेक्ट. अब अब मैंने गुरुओं से सीखा. किताबें देखी. आज मैं अपने आप को मतलब सब कहते हैं सर आप क्रिएटिव हैं. मैं खुद लिखता भी हूँ, कॉम्पोजिशन बनाता हूँ, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ. तो मतलब कि ये सारी की सारी ये जो सारे फोल्डर्स हैं ये मैंने अपने अंदर बना लिए. तो ऐसा हर कोई क्यों नहीं करता? यस यस, राइट. ऐसा हर कोई क्यों नहीं करता? यस, अभी आए हैं. सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्यों तैयार किए जाते हैं? उस पे डिपेंड क्यों होते हैं? क्वेश्चन आंसर क्यों उस पे ढूंढते हैं? क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते, किताबों में जाना नहीं चाहते. मेरे सवाल ये हैं. वेरी नाइस. ये हम जी मान के चलेंगे कि ये ड्रॉबैक है. ये ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी का. बच्चे हाँ जी जैसे अब एक हर एक चीज है. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगी, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, बल्कि सभी को ये कहना चाह रही हूँ कि जब कोई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है तो हमें जी इतना वेल अवेयर होना चाहिए कि हम इसको यूज कर सके, ताकि वो हमें उस वक्त काम आए जब हम उसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जी पैंडेमिक था, हम स्कूल नहीं जा सकते थे, तो अब हाँ जी हम अगर सीखे हुए हैं तो हमने पढ़ाया. मैं वो हाँ कहना जी चाह रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टेक्नोलॉजी में इतने गुम और इतने मस्त हो जाइए कि फिजिकल चीजों को छोड़ दीजिए. नहीं, कीप योर सेल्फ, स्ट्राइक ए बैलेंस. मैंने बताया हाँ ना, जी एडवांटेजेस भी बताया मैंने, डिसएडवांटेजेस भी बताया. उसमें मैंने कहा ना कि इट जी हैम्पर्स द क्रिएटिविटी. ऐसा हुआ है, जी हमारी क्लासेस में भी हुआ है. पीडीएफ हाँ जब जी उन्होंने आंसर पेपर का भेजा है तो वहां पे एक पीडीएफ के साथ ही बुक आ गई. बुक खुली पड़ी थी और पीडीएफ के साथ वो हाँ जी अटैच हो गई. तो हमने पकड़ा, हाँ हमने जी कहा हम आपको इसके मार्क्स नहीं देंगे. तो फादर आ गए लड़ने. नहीं नहीं, मेरी बच्ची देख नहीं रही थी उस वक्त, वो बुक वैसे ही खुली थी. हम कैसे मान लें कि बुक कैसी खुली रहती है भाई, और वही क्वेश्चन है जो हमने पूछा था. तो ये सारी चीजें हुई हैं. उसका हाँ गलत जी फायदा भी बच्चों ने उठाया है. दिस हैपेंड. और हाँ जी हर एक चीज को वो गूगल करके ब्राउजर में जाके देवर आंसरिंग, ये भी हुआ है. और हम इसको जी मान के चलेंगे कि ये सेटबैक था, ये डिसएडवांटेज था. जी जी हाँ, अब हम नॉर्मल डेज में आ गए हैं, फेस टू फेस लर्निंग है, तो बच्चों को बेशक ऑफलाइन मोड में आ जाना चाहिए. बट जी ऑनलाइन मोड के लिए भी हमको सारे टेक्नोलॉजिकल टूल से वेल अवेयर होना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े हम यूज कर सके. मेरे पास मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे कहते हैं सर मुझे ऑनलाइन क्लासेस दे दीजिए. करण सर, मैं इसका हाँ थोड़ा जी सा सर. मैं आंसर देना चाहूंगा. एंड गुड इवनिंग टू हाँ ऑल जी हाँ जी रिस्पेक्टेड एडवोकेटर्स. हाँ आई एम सॉरी जी कि गुड आज इवनिंग मैं सर. वो सब चीजें उतने अच्छे से ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इन दिनों मैं हरियाणा हूँ, तो फैमिली के अच्छा साथ थोड़ा सा रहने में फिर चीजें होती हैं. हाँ जी हाँ जी इस हाँ चीज जी का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा सर, कि टेक्नोलॉजी जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग रेडी कर रहे हैं उसको एक जी सेव करने का तरीका है. एक वो फोल्डर जी है. अब जी हमारे जितने भी पहले के, अगर हम कहें, ताम्रपत्रों के ऊपर लिखे हुए जो ऐसी हिस्ट्री थी या ऐसी बुक्स जी थी जिनको नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जला दिया गया था, हाँ जी जहां पर जो है अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो है एक आक्रांता आया हमारे उसमें देश में, उसने उस जी से ऐसे इतिहास को जला दिया जिसको जलने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम लगा. लेकिन जी सर. क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं जो इन फ्यूचर आज से आने के जो 10,000 साल के बाद भी उन चीजों को हम जो ओपन कर पाए जिस तरीके से आज ओपन कर रहे हैं. ये बात आपकी हाँ जी बिल्कुल सही है कि हमारा जो माइंड है वो इतना जबरदस्त है कि हम उसमें जो है आज तक जो हार्ड डिस्क बनी है वो 1 TB की या 2 TB या उससे ज्यादा टीबी की बनी होगी, लेकिन जो हमारा माइंड है उसके जी अंदर तो हजारों टीबी की मेमोरी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. ये आपकी बात हाँ बिल्कुल सही है. हाँ जी हाँ जी लेकिन लेकिन जिस तरीके से हर, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल इसमें दूं कि आज जी तक शायद हमारी आई के अंदर जितना मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है उतना मेगापिक्सल का कैमरा आज तक जो है दुनिया के अंदर बना नहीं है, जिसके जी अंदर इतनी क्लियर जो है चीजें कर पाए, या जितना क्लियर विजन के साथ हम लोग कलर्स को या बाकी सब चीजों को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस जितनी चीजें आज तक जो है बनी नहीं.
लेकिन इन सब के पीछे जो है टेक्नोलॉजी को यूज करने में बुराई नहीं है। सर मैं यहाँ पर इस बात से मैं सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ। इसका बहुत सी जगह बहुत अच्छा योगदान है। मेरा जो सवाल मैं है, वही बता रहा हूँ करण सर, एक बार सुनिए। मेरा जो जैसे सवाल आपने है, कहा कि हम लोग जो है बुक्स के अंदर जाकर के ढूंढते क्यों नहीं है। अब बुक्स का क्या है कि हम लोग हर नहीं, टाइम नहीं, पे, नहीं, मान लिया मुझे, मैं मेरा इस टाइम पे इस नहीं, नहीं, स्ट्रीट के अंदर खड़ा हूँ, मैं गली के अंदर खड़ा हूँ, सर और मेरा मुझे इस सवाल टाइम ये पे नहीं कोई था। चीज सर मेरा सवाल ये नहीं था कि हम बुक्स के अंदर जाके क्यों नहीं ढूंढते। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम बुक्स को फॉलो क्यों नहीं करते, पढ़ते क्यों नहीं है। अब मैं जैसे किसी से सवाल पूछता हूँ कि इस संसार में सबसे पहले किसने गाया, तो वो फटाफट फोन उठाएगा और गूगल पे उसको सर्च मारना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, वो पढ़ते क्यों नहीं, मतलब अपने आप को सर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं आज के बनाते। टाइम पे सर क्योंकि आज के टाइम पे गूगल वो आईटी फ्रेंडली हो गए हैं। सॉरी करण सर, जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। करण सर, ये एक अलग जो टॉपिक है इस चीज का, कि वो पढ़ता क्यों नहीं है। जिसने कुछ नहीं करना है, जिसने कोई चीजें नहीं करनी है, उसको तो आप चाहे कुछ भी कर दीजिए। टेक्नोलॉजी के अलावा जो उन सब चीजों को जो है आप देते रहिए, वो करेगा नहीं। ठीक है ना, वो एक अलग अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे प्रीति मेहरोत्रा मैम और ऋषभ सर जो है, कोई हमारे कोई रिस्पेक्टेड एडुकेटर है जो इसके ऊपर अपने व्यूज रखना चाह रहे हैं। यस, ओवर टू यू प्रीति मैम एंड ऋषभ सर। या करण सर, आप हैं वहाँ? आपका कैमरा स्विच ऑफ हो गया है, आप नेटवर्क में हैं करण सर? बिकॉज आई वांट करण सर टू बी देयर टू लिसन. I think he is not there. Good evening, everyone. Preeti ma'am, I would like to add something here. As I was just listening to Karan sir, and his question was this: why people do not look into the books? So, ma'am, what I feel, it depends from person to person, and also it depends of the in which the person has been his excellence. Like I am an English teacher, आप मुझसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछिए तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना बता के आपको वर्ब से स्टार्ट करूंगी, फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट करूंगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप किसी साइंस के टीचर से पूछिए तो वो आपको सेल से बताना स्टार्ट करेगा। तो ये तो मैम, और अगर आप मुझसे ऑल ऑफ अ सडन साइंस का कुछ पूछोगे तो आई विल बी ब्लैंक। तो मैम ये तो हमारी एक्सीलेंस है ना, कि मैं जिस चीज में एक्सेल हूँ आप मुझसे उस चीज का रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। अब मेरे से अगर कोई लैंग्वेज का कुछ पूछेगा, मैं तो कभी गूगल नहीं करती, because I feel I am not perfect. I am not saying that I am perfect, but हाँ मेरी उसमें अच्छी पकड़ है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कौन गूगल कर रहा है या कौन अपनी पर्सनल नॉलेज यूज कर रहा है। सो आई वोंट फील कि ये वेरी सॉरी कि ये रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइक वेरी सॉरी, आई एम नॉट डिसहार्टनिंग एनीवन, लेकिन ये मेरे पर्सनल है। मैं करण सर को ये बताना चाह रही थी कि करण सर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आज बुक क्यों नहीं फॉलो करते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है सर, एक तो जो प्रियंका मैम ने बोला और हर्षवर्धन सर ने कहा, बिल्कुल सही है। देखिए, अभी आज का टॉपिक था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैं आपको सिर्फ एक वो बोलना चाह रही हूँ, आज हम इस पीढ़ी में हमारे जो पूर्वज करते थे हम वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। हमारे को वो उतनी लर्निंग नहीं मिली। आज हमारे बच्चों को शुरू से, छोटा होते ही बच्चे को हाथ में मोबाइल आ जाता है सर। हाउ यू एक्सपेक्ट, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वो टेक्नोलॉजी से डिफरेंट जाएगा। सी हर, देखिए ये डायनामिक है, चेंज एक डायनामिक है और वो होना भी चाहिए, राइट। आज हमारे जो पापा मम्मी करते थे वो हम नहीं कर पाते, उनके जो पापा मम्मी करते होंगे वो नहीं कर पाए। तो ये चेंज है, ये हमेशा आता ही रहेगा और हमें एक्सेप्ट करना है। वी कैन नॉट बी ऑलवेज कि उससे डिफर जाके हम नहीं जी सकते। आज चेंज आया है टेक्नोलॉजी का, हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एजुकेशन में एक राइट मेथड पे, राइट, वो बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम टेक्नोलॉजी से परे नहीं जा सकते क्योंकि आज टेक्नोलॉजी की नीड है। आज बच्चा पैदा होता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है। आज 5 साल के बाद आप उसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मोबाइल से हट जाए, क्योंकि उसकी क्लास में मोबाइल से ही उसको पढ़ाया जाएगा, मोबाइल पे ही सारे कम्युनिकेशन होंगे, हर चीज मोबाइल पे होगा। तो हाउ कैन यू डिफर, और उसमें बच्चे की गलती नहीं है ना, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट चेंज, वो चेंज में आया है। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। रही बात कि क्यों हर एक चेंज का एक एडवांटेज होता है, एक नॉन एडवांटेज होता है।
आप डिपेंड ये करता है कि आप अपने बच्चे को कैसी सीख देते हैं कि उसका उस टेक्नोलॉजी से वो कैसे एडवांटेज ले, बजाय उसकी उसका नेगेटिव में जाए। आज वो जैसे आयशा मैम ने बोला कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, और ये उनके बच्चे के साथ नहीं या मेरे बच्चे के साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ है कि वो अगर क्लास ले रहा है, साथ में वो डिफर होके कहीं व्हाट्सएप पे अपने बच्चे, किसी बच्चे के साथ व्हाट्सएप पे चैट भी करने लग जाएगा, तो गेम भी खेलने लग जाएगा। तो वी नीड टू चेक ऑन दैट चाइल्ड। हमें उस पर कैसे हमें उसको संस्कार देने हैं कि वो उस पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर रहा हो या उस पर डिफर ना जाए वो। लेकिन आप ये कहे कि नहीं टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके बुक क्यों नहीं पढ़ता, दिस इज नॉट रेलेवेंट। आई टेक्नोलॉजी के साथ रह के एक संस्कार दे सके। टोटली एग्री। मैम आई हैव इन चीजों को जो है करना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं,